Teaching right. Fine. Is the switch thing not working? Go ahead. Very happy and prosperous 2023 for all of you. Thank you. So let me write my name. This is my name. Okay, can you pronounce it? Janmejoy. Okay, and I will take your introductory microeconomics. Fine. So you had your class on mathematics. Okay. Now after this, we will add in the class on statistics also and your GE paper. Okay. That we will see. But now I have come to take your microeconomic class. And in microeconomics, you have all gone through some topics of microeconomics in your 12th class, isn't it? How many of you had economics? Or anybody who had not studied this particular subject at all at your 12th level? Okay, some of them. Fine. But that doesn't matter. Social science subjects can be, studied at any point of time, and you can also understand it. What you require is bit analytical skill to, analyze certain things. And in economics, we expect also student must know mathematical things, that is, tools to be used, mathematical tools to be used to analyze or explain economic phenomena. Okay. So, but this particular paper in your first semester doesn't require much of mathematics. Since you have mathematics and statistics given to you as separate papers, this paper actually calls for more of analysis, okay, use of logical mind to explain certain things. And since it is microeconomics, basically we are going to teach you about all the things that are considered under microeconomics as a field of study. So in microeconomics, what you basically take up economic agents at the micro level, functioning at the micro level. Who are the economic agents? Those agents who take decisions about economic activities to be pursued in the society. Okay. So we will define those economic agents. Who are they? Second word, how they take decisions. What drive those decision making? What factors they consider for taking a decision? Okay. Then certain concepts in economics that we are going to tell you. Concepts like positive economics, normative economics, the difference between micro and macro. Okay. We get all these things. So the first topic of this particular microeconomics is economic resources and opportunities. Number two,
gains from trade. Number 3, individual and society. And these 3 topics are basically under Introduction to Economic Trade-offs. Introduction to Economic Trade-offs. So these are the 3 subtopics we are going to study here. Okay. So let us take up, when we take up economic resources and opportunities, it's a broad subtopic where when I talk about, say, let us begin with who are the economic agents who take decisions? Individual agents. So when we talk about microeconomics, we talk about individual economic agents, functioning in the society for pursuing or those who pursue economic activities, take decisions. What decisions they take? Economic agents. What type of decisions they take? And who are the economic agents? Individual economic agents. The best example is a consumer. Number 2, a producer. I am an individual, fine. But when I go to the market, I spend money, I take a decision on what to purchase. But that is not that easy the way purchasing decision is taken. It's not that easy because so many things come into play. Number 1, what is the affordability? Okay, the price being asked in the market, charged in the market for that product, whether I am ready to pay that price or not as an economic agent. Because I am functioning there as an economic agent, which is called consumer. I depend on my income. I look at the price, consider it whether it is at that point of time, whether I can actually pay or not. Because I have certain other things also to do. So many things go on. So many things actually they interplay in your mind. And finally you reach a particular point. As a producer also, you know that if you want to produce a good which is demanded in the market, and you want to produce that, you are actually motivated by maybe profit motive. Then in order to, produce that, because you are motivated by profit, you have to incur certain cost, like arranging the things, the factors, okay, set up a plant or a factory, like that. So, organizing production is it's not that easy. It's a risky thing as well, because you may lose also. We do not know what is going to happen in future. What is a government rule that talks about organization of production process? You have to follow that rule. You have to be legally sound when you are dealing with others. So many things happen. But these are economic agents, consumer, producer. When they take decision, they consider so many things. Given the resources, because they use resources. So, economic resources are, what are the resources they use? What are available? Land, labor, Factor resources, land, labor, capital, organization, entrepreneurship. The major characteristics, the important characteristics of these resources are they are scarce in nature. And because they are scarce in nature, they have got alternative uses. Because the same resource will be used for everything, and you cannot put all the resources in one place for all the time. So you have to use the same resource for other things as well.
And resources are scarce because human wants are unlimited. You have studied about this. Okay? So, use of resources become very important for economic agents because of the scarcity in nature. Scarcity is, signaled by or indicated by price. Why price is being charged? The moment price is charged for any product, it means that that particular thing is scarce. Otherwise, it would have been available free of cost. What is the problem? You think about the market, say very nearby you have Kamla Nagar market, which is a very good market complex. You can enjoy yourself, move there, look at all the shops that are being there, look at, window shopping. You think as if all the goods are available for you. But you cannot simply go and take any one of it. Why? Because the seller will charge a price. They are not available freely. That resources are not available freely means that they are scarce. Labor resource, for example. You are now in an age group where you can always give your labor. Particularly a labor force, the age group demographic says that the age group of labor force basically is 15 to 60 or 18 to 60 like that. Standard age group of labor force in a country. So you are all part of the labor force in the country. But will you work freely? No. You have to be compensated. Why? Because sacrificing leisure is involved when you go for it. Go to work. You are sacrificing your leisure. So sacrifice of leisure have to be compensated. So labor is a scarce resource. Similarly capital, similarly entrepreneurship, land resources. Take a piece of land in Connaught Place in Delhi. You won't get it or the price will be skyrocket. Okay. So the question is scarce resources. Because resources are scarce and wants are unlimited and which has to be, in order to be, satisfying the wants, production of goods and services must be continued over the time so that people get satisfaction. These goods and services which are being produced by scarce resources, if any good to be added after that, same resources have to be used for that. Means that you have to withdraw resource from one area to increase resources in other area. This is called transformation of resources. So this transformation of resources, decreasing the production of one in order to increase the production of other, is nothing but in terms of price, the one you are reducing always involves some cost. That is the price that the other good must command in order to be offered in the market. Got it? So this is the relative price concept. This is the relative price. If we talk about two goods, you have studied about production possibilities. If you want to reduce one, you can increase the other. So that is the price you have to pay for it. So relative price. So factor resources, economic resources are scarce in nature. They have got alternative uses. Once you know that they have got alternative uses, comes the question of opportunity or choice and choice. Alternative uses means when resources are used for production of one good or the production of other good, you always weigh between the two. Which one has to be taken up now? Winter season, production of say one clothes, this is most important for the time. So we can withdraw our production from cotton, simple cotton shirts to say a jacket. Okay. So in that case, when you are looking at certain information like the weather condition, these are the available information to you as a producer. The weather condition has changed, so people will demand more warm clothes. So your production unit has to be now adjusted in such a manner that they produce more of winter jackets. This involves a choice. When
And when this choice, you are making a choice, there is always a cost involved to reach to that particular choice. And that cost is called opportunity cost. Because when you are choosing to produce certain brand of jackets or certain types of jackets, you are leaving or you are sacrificing not producing. I mean, sacrificing means you are not producing another type of jacket. In that case, you are giving up one to produce one. Okay, so opportunity cost talks about this. In economics, opportunity cost is a very important thing. It's one way of looking at the relative price. When you are sacrificing a good to produce another good, you are actually sacrificing one opportunity but going for the best at that point of time. So when you are enlisting various alternatives before you as an agent, as a producer, you have so many things to produce. So you are listing 1, 2, 3, 4, 5, but keeping at your own skill, the demand at the time, the weather conditions, all other informations, your own income strength or budget. When you look all these things and take care of all these things, consider all these things, you are reaching that to a situation. You are reaching a situation where you are taking a decision that I will produce this only. So that decision have been taken after considering so many factors, and at the end you are not producing a particular thing and producing another thing. So that not producing is basically the money value or the whatever is involved there calculation. That calculation is an opportunity cost. If you are getting an employment in Bombay but also in Delhi, you have to choose one. If you are choosing in favor of Delhi, that means you are losing or you are sacrificing all the benefits to be in Bombay. If those benefits can be calculated in terms of money, then that is the opportunity cost in terms of money. So if I am getting a salary of 40,000 in Delhi and a salary of say 60,000 in Bombay, but I choose Delhi, then my opportunity cost is 60,000. Okay, so that is one way of looking at how economic agents actually take decisions and what are the things that they consider while taking decisions. What are the sacrifices they are making and what are the benefits they are getting. Cost and benefit analysis, they always do this thing. So, opportunities are available based on the motive or the goals that the economic agent set before them, and accordingly they will evaluate. There are three principles here we will talk about when any economic agent tries to function in the society. What are those? Optimization. Number 2, equilibrium. Number 3, empiricism. These are three principles which are given in your prescribed book, Acemoglu et al. When we talk about economic resources and opportunities, the basic thing, the major objective is to achieve optimization using those resources and those opportunities available. Optimization means every economic agent thinks that let me take or let me pick up the best possible feasible thing given the resources. मेरे पास जितना है उसी को ही तो यूज करूंगा, सिंपल. मेरे तो जितना है मतलब लेट अस summarize it in terms of money. मेरे पास 100 रुपया है and my purpose is to satisfy my hunger. मुझे भूख लगी है, I have to satisfy my hunger. जेब में 100 रुपया है. ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर क्या कहता है कि the best possible food that I will get using this money. बहुत सारे alternatives हो गए, सामने रखा है, so we go to the shop, fast food available है, you have got combinations there, chole bhature, you have combination of say noodles, you have combination of say bread pakoras and samosas. Then you have to
choose one of them, give in your money. अगर तुम्हारा consideration है मुझे तला हुआ चीज नहीं खाना है, I am health conscious, ठीक है, तो ठीक है, I will just avoid anything that is oily. तो opportunities मेरे पास है, but I have to make choice because I have to reach one particular destination. वो destination क्या है? That depends on what is my own assumptions plus मेरा constant मेरा income है, ठीक है. 100 रुपया में हो सकता है I like noodles, but a plate of noodles जो है वो मिल रहा है 150 rupees, so I cannot तो optimize मैं नहीं कर पाऊंगा because the cost is high, ठीक है. So उसको हटाओ. Naturally, when you take decision giving the alternative before you, ultimately you reach a point. So best possible point depends on your constant, that is income constant, that is the major constant, and of course the alternatives available and their prices in the market. Seller जो price कहेगा उसको तो तुम्हें accept करना पड़ेगा, उसी हिसाब से जाना पड़ेगा. So optimization is one major thing. Optimization करने के समय what you consider? The way. One is you look at the total value, or you can use marginal principle, marginalism. Economic agents, चाहे वो consumer हो, चाहे वो producer हो, what they do? Take any example. जो तुम्हारा standard book में वो एक standard example दिया है, AC Moglu में. Finding out an apartment for rent. ठीक है? You are a student. You have come from outside of Delhi. You have taken admission in Eco Honors here. You need to stay in Delhi for all these 6, 7, or 8 semesters. So you have to look for accommodation. So what are the possibilities before you? Your classroom is at arts faculty. You have to come here. This is your prime working place, and nearby there are 4 and 5 localities. Kamla Nagar there, Patel Chest here, DU campus accommodation is also available, Mall Road, or if you go a bit far up, Rohini, Model Town, all these areas are there. But finding an apartment in all these places, if you look at the rent, it will be different. So let us say you consider 2-3 things to choose one apartment, and specifically let us say 2 important things are there besides others, but let us only focus on 2. One is what is the rent. So how much money your parents are giving you if you are not working, or if you are working, how much money you are earning so that you can devote for rent. Number 2, which is also very important consideration for you, that what is the time you take to commute from your place to the institution. That time, the value of that time is measured in terms of opportunity cost. Why? Because there is no other way to know, because time is basically it is relative in nature. If you stay in Rohini, you may get a very apartment at a very less cost, but you may spend more time to commute and come here. Okay. However, if you take 1 hour from there, but if you stay in Patel Chest, you may come here in 5 minutes. But the rent is high here. Okay. Let us assume that the opportunity cost of time is ₹10 per hour. So the number of hours you take to commute multiplied by 10 is the opportunity cost of travel or time, plus the amount of rent you are giving. Fine. So all these alternative locations, the rent and the opportunity cost of time, you estimate for all these alternative locations, and that is what you actually do. You may not say in terms of that this is my opportunity cost,
but you always calculate that way कि मुझे इतना समय लगेगा 2 घंटा मेट्रो में जाऊं या ऐसे जाऊं वैसे जाऊं but 2 घंटा लगेगा if the say class starts at sharp at 9 o'clock मुझे सुबह उठ के भागना पड़ेगा अगर मैं रोहिणी में रहता हूँ so that way और मेरा रेंट भी ओवरऑल इतना है क्यों ना मैं पर्चेस में ले लूं 100 रुपया बचा लूं या क्यों मैं टाइम सेव कर लूं डिफरेंट लोगों का डिफरेंट कंसीडरेशन नॉट दैट एवरीवन विल कंसीडर इन द सेम फैशन किसके लिए अमाउंट बड़ा है तो किसके लिए टाइम बड़ी है ऐसे होता है सो व्हेन यू ऑप्टिमाइज ट्राई बट ऑल आर ऑप्टिमाइजिंग एट द सेम टाइम व्हेन यू ऑप्टिमाइज क्योंकि ट्राइंग टू रीच द बेस्ट तो your calculation is either based on total so total rent plus opportunity cost total value निकाल लिया तीनों लोकेशन का आपने total value rental value पूरा निकाल लिया with opportunity cost and choose the one based on the total value or marginalism what is marginalism this is another way of looking at things but you arrive at the same result marginalism में क्या होता है कि we consider what is the value of the extra that we are taking आपने मार्जिनल यूटिलिटी ये सब पढ़े हो ठीक है ये कॉन्सेप्ट क्या है जैसे फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज एडिशन फ्रीक्वेंसी इज दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल if you are hungry and taking one extra plate of the food that you are consuming your hunger is already decreased by some amount when you have taken the first plate in the second plate you will not get the same kind you do not have that same kind of feeling as you had in the first so the utility of the second plate is naturally lower than the first one because it is the extra additional so the additions means marginal in economics marginal is the addition that you are making to that so those additional values will slowly reduce to come to zero or negative and you have to stop there because you normally don't want to get negative values so your final decision will depend on when is that marginal value is close to zero that means the total value is maximum so these are two different techniques used for optimization to reach to a particular decision. So a consumer optimize giving the income constant, optimize the amount to be consumed given the prices. A producer optimize how much to be produced given the cost of production or the budget or the resources available in the market. That way. Coming to the second question. Once you reach the optimum value, how to know that that value is actually optimum. One way of knowing this is if you deviate from that value or from that point, you are actually worse off than before. हमें ये पता नहीं होता कि हम एक पॉइंट पे पहुंचे हैं तो एकदम सही है कैलकुलेशन करने के बाद भी लगता है कि सही कैलकुलेशन किया है तो बेस्ट प्रूफ क्या होगा अगर हम उस पॉइंट से हट जाते हैं and we are getting less satisfaction than that point it means that point was better so this is the best way of looking at optimization ठीक है ना एवरेस्ट में आप पहुंच गए पता कैसे चलेगा एवरेस्ट क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट जो होगा एवरेस्ट के नीचे ही होना चाहिए अगर आप ऊपर चलते जा रहे हो you have not reached the maximum optimum is not maximum actually optimum why we say it could be maximum given your own things आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी है उसी के लिए वो मैक्सिमम हो सकता है your training your educational standard your income your knowledge उसी के हिसाब से आप ऑप्टिमाइज या मैक्सिमाइज करते हो they are not the same thing theoretically speaking maximum is different but optimum is feasible given your situation ठीक है तो equilibrium point is that point where deviation from the point is actually giving you less satisfaction than before and equilibrium means
all are optimizing at the same time. तो साइमल्टेनियसली सारी सोसाइटी में सारे लोग इकट्ठा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं. आप कोई भी मार्केट प्लेस चले जाओ, सारे कंज्यूमर को ऑब्जर्व करो. They are all purchasing in the market differently, with different income standard, with different economic resources they have, they possess and purchase different goods, but trying to achieve optimum at their own level. So society में सारे लोग इकट्ठा जब ये काम करते हैं, the society reaches equilibrium. So equilibrium is another important thing in economics, another principle जो कि economics में हम achieve करना चाहते हैं. All economic agents want to achieve that. Empiricism, हमारे पास कोई tools नहीं होता है बहुत सारा कि हम justify कर पाए whatever we are doing is correct, but हम try करते हैं कि उसको prove कैसे किया जाए. So best way to do it on the basis of available information and data. मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ते हो इंडिया में से जीडीपी इतना है या प्राइस राइज इतना हो गया, ये सब कैसे पता चलता है? बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन एम्पिरिकल इंफॉर्मेशन. एम्पिरिकल वर्क करो मीन्स यू कलेक्ट डेटा एंड प्रूव इट. If government of India says that, or any economic survey says that, this year India's GDP has decreased, तो कोई जरूरी नहीं है कि सबको ये मानना पड़ेगा. या economic survey says that GDP has increased, तो इसलिए रिसर्च होता है इसको जानने के लिए. Empirical research is about collecting information and having a proof of that. ठीक है, तो whether we are how we are reaching in equilibrium point, optimization, ये सारा जो है, in order to prove we have got empirical data available, we do lot of work on that. आजकल बहुत सारे techniques econometrics में निकल चुका है. You have got softwares to run equations, estimate values of these things. So statistics का tools आप use करते हो, mathematics का tools use करते हो. So economics में empiricism is a fact and is used, in fact, is a way of life there. बहुत thoroughly ये सब use होता है. So then come to another thing जो हमने यहाँ बताया नहीं, ट्रेड ऑफ. ऑल्टरनेटिव्स के बारे में जब मैं बता रहा था कि we want to optimize or maximize or reach the equilibrium point, I talked about opportunity cost. Another thing that automatically comes is trade-off. जब भी हम alternatives करते हैं, actually a trade-off is involved. Sacrificing something for gaining another. इसको हम कहते हैं simple way में trade-off. यानी अगर मुझे कॉटन प्रोडक्शन में जाना है और व्हीट प्रोडक्शन मुझे सैक्रिफाइस करना है, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम करते हैं, सो दैट इज अ टिपिकल ट्रेड ऑफ. हाउ मच ऑफ व्हीट टू बी सैक्रिफाइस्ड व्हीट प्रोडक्शन टू इंक्रीज कॉटन प्रोडक्शन बाय अ सर्टेन अमाउंट. इन इकोनॉमिक्स ट्रेड ऑफ इज अ कॉमन थिंग जिसको हम टिपिकल वे में जो हम लोग कहते हैं गिव एंड टेक, क्विड प्रो क्यो, ऑल these phrases we use. So similarly, so economic trade-offs always involves how to allocate your resource among various things that you want to have. For example, आपके पास you are all surfing your in social media, है ना? Facebook अकाउंट सबका है? Oh good, किसका नहीं? Instagram. What is that? क्या करते हो Instagram? सर्फ करते हैं. Very nice. Looking for someone without knowing.
What is the opportunity cost here? इसका opportunity cost है not doing something that you can do, है ना? So let us think that way. Facebook में हम जब सर्फ करते हैं, मैक्रो लेवल पे आप सोचो, when you were all on Facebook for 1 hour, you did not study for 1 hour, है ना? Yes. So you did not study. If you did not study for 1 hour, उसका रिपरकशन क्या होगा? Your marks come less in the exam because your effort is reduced by 1 hour. Because your effort was reduced by 1 hour, maybe that you did not get a job worth 1 lakh, you got a job worth 90,000. So you lost 10,000. Okay. So one of you lost 10,000, and let us assume that 100 youth lost job of 10,000. So what is the total value that is lost? 10,000 into 100. How much it is? 10 lakhs. So GDP is reduced by 10 lakhs. So the opportunity cost of surfing on Facebook at this point of time is 10 lakhs. Simple. If I ask you whether Facebook is free or not, you think Facebook is free because you are surfing on it. So the question is, this is also a kind of trade-off. If you are on the Facebook, you have to give up 10,000, which you have not immediately accounting or calculated, but it is there. So nothing comes from free. That is a trade-off. So the question is, if you have, say, 5 hours totally available in a day for Facebook or for class, then if you are giving 2 hours here, you have to give 3 here, and if you increase it to 4, then you have to reduce it by 1, because then 5 hours cannot be changed. So the question is, this is trade-off. When you know that this is going to happen, so यहीं पर होता है issue. Agents जो हम बात करते हैं as a consumer और as a producer, उनके साथ यही issue होता है कि मेरे पास 1 लाख का बजट है, तो मुझे लेबर में इतना खर्च करना है, कैपिटल में इतना खर्च करना है. 1 लाख तो चेंज नहीं होगा, बट इफ लेबर प्राइस एंड कैपिटल प्राइस चेंज हो जाता है, तो माय इक्वेशन विल चेंज अकॉर्डिंगली, बट 1 लाख विल रिमेन कांस्टेंट. तो मुझे ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा बिटवीन लेबर एंड कैपिटल. सिंपल. जैसे फेसबुक में मुझे अगर जाना है, इतना मैं लूज कर रहा हूं यहां पर, अगर मैं फेसबुक को कम कर दूं तो वहां मैं गेन करूंगा. तो मेरे लिए अभी क्या चाहिए? So that is the question. So trade-off is another very important concept in economics. Just let me take it. मेरा क्लास चल रहा है इधर. So come to Sir, yeah. opportunity cost और trade-off के तरह में same हो गया. हाँ नहीं, the question is depending on the report that you are writing, कि किस पर्पस के लिए आप काम कर रहे हो, वो टर्म यूज करना है, वही टर्म यूज करना है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप कहाँ से यूज करते हो? व्हेन यू आर चूजिंग थिंग्स, चॉइस आपके सामने है, बट अल्टीमेटली देखो चॉइस को तो आप लिस्टिंग कर रहे हो ना, 1 2 3 4, स्टेइंग इन बॉम्बे, स्टेइंग इन दिल्ली, स्टेइंग इन कोलकाता एंड भुवनेश्वर. सबके पास सबका सिटी कॉस्ट, सिटी में जो रहने का कॉस्ट अलग अलग है. आपको जॉब मिल रहा है, यू फाइनली वेंट टू बॉम्बे. तो जब भी चॉइस होता है, लास्ट 2 में ही चॉइस हो जाता है.
बाकी तो आप धीरे धीरे फिल्टर आउट करते हो, लास्ट टू में चॉइस हो। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टेइंग इन बॉम्बे इज whatever was available in Delhi, so I forgo that. Trade off में भी वही हो रहा है, but trade off is used in a different way. Trade off में क्या हो रहा है, whatever you are giving up in the end, while maybe it is situational, आप जब ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज करते हैं मार्केट्स में, तो वहां पर आपके सामने ट्रेड ऑफ दिखाई देता है कि मुझे एक इतना इनकम आई हैव गॉट बट आई हैव टू टेक टू थिंग्स, तो उसी के बीच में ही मुझे सर्व करना है, तो वहां ट्रेड ऑफ अवेलेबल हो जाता है। लीजर एंड लेबर ये ऑटोमेटिक है, जहां पर नेचुरल है वहां पर आप ट्रेड ऑफ को लगा सकते हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में चॉइस में डिफर, बट ट्रेड ऑफ में एक चीज एक नेचुरली उभर के आ जाता है कि इफ आई एम टू सैक्रिफाइस, इफ आई हैव टू गो फॉर सम मोर वर्क, आई हैव टू सैक्रिफाइस माय लीजर, दिस इज नेचुरल, वहां ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। देन यू असाइन some economic values to it, some monetary values to it, depending on your own assumptions. ठीक है, those assumptions may vary from, yeah. सर जैसे कि मान लीजिए मेरे को एक जगह पे 90,000 की जॉब मिली और इस जगह पे 1 लाख की जॉब मिली, अब मैंने 90,000 चुन के 1 लाख का लिया, सर ये ट्रेड ऑफ होगा या फिर मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा? देखो ये ट्रेड ऑफ होगा या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, डिपेंड करता है। आप ट्रेड ऑफ में भी कुछ चीज सोचते हो, क्या सोचते हो, आपके पास हर समय 90 और 1 लाख जॉब के लिए ऐसे कोई ट्रेड ऑफ का सिचुएशन आता नहीं है। बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इसलिए कहा था, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, एक जॉब आप चूज करते हो लाइफ में वंस और ट्वाइस, ट्रेड ऑफ तो डे टू डे बेसिस पे होता रहता है। सर मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रेड ऑफ दोनों सेम है, बस फर्क ये कॉन्सेप्ट सेम है, मिशन अलग-अलग हो जाएगा। हाँ आप ऐसे कह सकते हो क्योंकि वो बेसिकली कॉन्सेप्ट वाइज आपका वो फीलिंग्स मीनिंग एक सेम वे में चल इन्वॉल्व सिचुएशन के हिसाब से। हाँ मैंने जैसे कहा ट्रेड ऑफ बिटवीन लीजर एंड लेबर और आवर्स ऑफ वर्क, ये ट्रेड ऑफ होता ही होता है। ठीक है, और जो इनकम ट्रेड ऑफ मतलब क्या तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो किसको पाने के लिए। और इनकम वाले में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ये होगा कि अगर मैं कहूं कैलकुलेट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि मुझे क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स मैंने किया था और बेस्ट 2 ऑल्टरनेटिव्स क्या था जिसमें मैं बेस्ट को लिया, सेकंड बेस्ट को छोड़ा। ठीक है, सो व्हेन यू फाइंड आउट, ट्राई टू एस्टिमेट दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देन यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ चॉइसेस, अल्टीमेटली गोइंग टू द फाइनल। ठीक है, ओके। देन कम टू गेन्स फ्रॉम ट्रेड। एक्सचेंज में देखो मार्केट में हम लोग जाते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स का अनदर एक जो परस्यू करते हैं ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स, दैट इज व्हाटएवर द पर्सन इज गेनिंग आइदर एज ए कंज्यूमर और एज ए प्रोड्यूसर। हम गेन क्या करते हैं, कंज्यूमर आल्सो कैन मेक प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट को हम ऐसे सेंस में देखें कि इट इज समथिंग दैट वी आर गेनिंग, गेन इज प्रॉफिट, सरप्लस इसका अल्टरनेटिव टर्म्स सिनोनिम्स। एक कंज्यूमर कैसे गेन कर सकता है, बताओ। सर एक गुड को छोड़ के दूसरा गुड ले लिया, क्या क्या मतलब इतना बेनिफिट मिल रहा है वो, मतलब मैं कोई मार्केट में गुड लेने के लिए गया तो कोई और कैसे पता चलेगा मेरे लिए, सर इससे मिलने वाले कैसे पता चलेगा? एक प्रोड्यूसर का गेन को हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, क्यों? प्रोड्यूसर नेचुरली उसका अकाउंटिंग कॉस्ट हम देख लेंगे। इकोनॉमिक्स में तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एज्यूम करके कैलकुलेट करना पड़ता है, इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, इट में वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अकाउंटिंग कॉस्ट तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होते हैं, मॉनेटरी कॉस्ट जो इजीली अकाउंटिंग हो गया, आपको प्राइस इन द मार्केट आपने देख लिया, तो एक बंदा जो 10 रुपया लगता है उसको प्रोड्यूस करने में और 12 रुपया में बेच रहा है, तो सिंपल कैलकुलेशन ये कहता है कि 2 रुपया उसको प्रॉफिट हो गया, तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड फॉर द प्रोड्यूसर इज 2। एक्सप्लिसिट वे में इकोनॉमिस्ट क्या कहता है वहां पर, कहता है नहीं ये सिंपल तरीके से आपने जो कैलकुलेट किया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि बंदे को
जो भी बंदा 10 रुपया में इसको प्रोड्यूस किया है वो तो उसका अकाउंटिंग कॉस्ट था, लेकिन उसके लिए वो और भी कॉस्ट इनकर किया है जिसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। ठीक है, पोल्यूशन कॉस्ट का क्या मॉनेटरी वैल्यू है? कुछ नहीं है। यू आर गेटिंग सेटिस्फैक्शन बाय ड्राइविंग ए कार, बट एट द सेम टाइम क्रिएटिंग पोल्यूशन इन द सोसाइटी फॉर अदर्स। अल्टीमेटली यू आर आल्सो अफेक्टेड बाय पोल्यूशन। हाँ, इनकरिंग मेडिकल एक्सपेंसेस, उसको हम कैलकुलेट तो करते नहीं है, जीडीपी में भी कैलकुलेट नहीं होता है। तो देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन कि हम जो जीडीपी को खाली ऐसे दिखा रहे हैं, क्या इज इट एक्चुअली डूइंग वेलफेयर फॉर यू? क्योंकि आपने उसका कॉस्ट भी तो इनकर कर रहे हो, उसका जितना आप प्रोड्यूस करते हैं उतना ही कॉस्ट आप इनकर कर भी रहे हैं। इन ए वे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इकोनॉमिस्ट ऑलवेज इस सब चीज को डालते हैं कि भाई आपने कितना सैक्रिफाइस किया, उसका मनी वैल्यू नहीं है, उसको डालना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज डालना पड़ेगा। तो गेन्स फ्रॉम, अभी अगर हम सिंपली गेन्स फ्रॉम ट्रेड करें, एक प्रोड्यूसर के लिए गेन्स फ्रॉम ट्रेड इजीली, चलो अकाउंटिंग वैल्यूज को लेके हम कर लेते हैं कि प्रोड्यूसर को सरप्लस मिल रहा है। आफ्टर ऑल कोई भी बंदा, एनी इकोनॉमिक एजेंट कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज? अगेन आई एम टेलिंग यू, 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। बोथ आर इक्वल, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोडक्शन। जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे सारा चीज कंज्यूम नहीं करते, थोड़ा बहुत रखते हैं फॉर फ्यूचर। तो यही बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, और इसी एक्टिविटीज के अंदर वी आर ऑल इंटरैक्टिव। आज कंज्यूमर, आज इन्वेस्टर, आज प्रोड्यूसर, हम इंटरैक्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रोल वी आर प्लेइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो कंज्यूमर का जो रोल है, सपोज कंज्यूमर का बेसिक रोल हो गया कि मार्केट में परचेज करेगा, परचेज करने में भी उसको फायदा है, क्योंकि आउट ऑफ, देखो, द कंज्यूमर इज परचेजिंग बिकॉज द कंज्यूमर वांट सैटिस्फैक्शन, बट सैटिस्फैक्शन बीइंग अ साइकोलॉजिकल फेनोमेना, हम उसको मॉनेटरी वैल्यू में कैसे लें कि उसको गेन हुआ कि नहीं? तो मॉनेटरी वैल्यू में अगर हम डालने के लिए कोशिश करते हैं, तो दैट इज अ सिंपल कैलकुलेशन वी मेक, दैट व्हाट इज द कंज्यूमर रेडी टू पे और willing to pay for the good rather than going without it। ठीक है, अगर मेरा अफोर्डेबिलिटी है, मुझे एक कोट चाहिए, विंटर में ठंड हो रहा है, आई एम रेडी टू पे बिकॉज हो सकता है मेरे पास अफोर्डेबिलिटी है, एंड आई एम रेडी टू पे 5000 रुपीज फॉर दिस। और जैसे तुमने कहा, मार्केट में गए जब हम जाते हैं, सेलर इज कोटिंग ए प्राइस ऑफ 4000, देन आई बिकम वेरी हैप्पी कि आज मेरा 1000 रुपया बच गया, which is a very psychological phenomena, differs from person to person। होता है, मम्मी ने पॉकेट मनी दिया है कि बेटा जाओ टमाटर खरीद के लाना, और 50 रुपया दिया है, और तुम्हें टमाटर और 1 किलो ले आना। चांस की बात है कि उस दिन टमाटर तुम्हें 40 में मिल गया, तो 10 रुपया का हो गया ना, 2 गोलगप्पे। So the question is, we try that way, या वो पैसा आप रख लोगे, मम्मी मेरा सरप्लस है 10 रुपये, वो टमाटर के कैलकुलेशन में जाएगा, लेकिन आप उसको सरप्लस में रखोगे, ठीक है, उस पर्पस के लिए था और हमने सेव कर लिया। So the question is, gains from trade हम क्यों बात करते हैं? Every consumer and producer in the process of exchange want to achieve some gain, otherwise कोई काम नहीं करेगा अगर गेन नहीं है तो। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज भी होता है जब गेन होता है, ठीक है, तो वो जो गेन है, प्राइस सेटिंग ऐसे होना चाहिए दैट प्राइस ऑफ द गुड गिव्स both consumer and producer some kind of surplus। The surplus to a consumer is consumer surplus, the difference between willingness to pay and the actual payment in terms of price, and the producer के लिए the minimum supply price and the actual price, the difference between that। And normally ये अगर achieve हो जाता है मार्केट में, market clear, so both producer and consumer are happy। That is what we say, the society achieves maximum welfare। ठीक है, मैं तुम्हें एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं एंड आई स्टॉप हियर। से देयर आर 2 countries trading with each other, ठीक है,
कंट्री ए बी ट्रेड हो रहा है व्हीट एंड कॉटन में, both can produce both the goods. ठीक है, in terms of hours country A can produce 6 units of wheat or 2 units of cotton, or country B can produce 1 or 2. ठीक, दो सिचुएशन दे रहा हूं तभी जाके समझ में आएगा. ए बी in this case either A can produce either 6 or 1 cotton, 6 wheat or 1 cotton. B can produce either 2 wheat or 4 cotton. अगर A और B अपने आप में ट्रेड करें तो पता चलता है कि B is very efficient in cotton, A is very efficient in. So अगर ये दोनों एग्री कर ले कि भाई मैं सारा कॉटन प्रोडक्शन कंट्री बी करे और सारा व्हीट प्रोडक्शन कंट्री ए करे और वो एक दूसरे को एक्सचेंज करे, तो कुछ कॉटन इधर आ जाएगा, कुछ व्हीट उधर चला जाएगा, बोथ विल गेन. दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एडवांटेज. रिसोर्सेस ऐसा है कि दोनों कंट्री में ऐसे बना हुआ है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, या एंडाउमेंट ऑफ रिसोर्सेस इज सच दैट one country is totally having advantage in one of the products and the other country have total advantage in another product, so they can exchange. However, that could be trade possibly because the gain is very visible here, it can be easily calculated, there is no problem. But in this case it could be relative, but still there is a possibility of trade because both are gaining if they specialize in one of them. And how to find out which is the specialization product in that particular country? That you can do by calculating the relative price. So this is my question to you. Which country should produce what and okay, कोशिश कर. And I am telling you or this or this, this or this. ठीक है? So which country should devote time for production of what, and if they trade, what should be the price for that, और कितना गेन करेंगे अगर गेन करेंगे तो, और किस रेंज में वो प्राइस होना चाहिए कि गेन करेंगे. मैं एक क्लू दे रहा हूं, अगर ये ट्रेड करते हैं कंट्री बी अगर कॉटन में और कंट्री ए अगर व्हीट में या फिर वाइस वर्सा किसी में भी, तो ट्रेड के बाद अगर मैं व्हीट प्रोडक्शन कर रहा हूं और तुम कर रहे हो कॉटन में, इसका मतलब तुम मेरे से जब व्हीट लोगे तो सेम कॉटन के जगह ज्यादा व्हीट मिलेगा तो लोगे ना, नहीं तो क्यों लोगे. मतलब अगर कंट्री बी तुमसे व्हीट लेगा 2 कॉटन पे अगर व्हीट लेता है तो उसको 1 व्हीट से ज्यादा मिलेगा तभी तो लेगा ना, क्योंकि वो तो ऐसे ही 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है. गेन का मतलब क्या है कि मेरा एंडाउमेंट जितना है उससे मुझे ज्यादा मिल रहा है, तभी तो मैं गेन करूंगा ना. ये सबको पता है, क्योंकि तुम जब निगोशिएट करोगे तुम सीधा कहोगे मेरे पास इतना है, फिर क्या जरूरत है उतना बढ़ाओ. प्राइस निगोशिएशन जैसे होता है, तो कैसे होगा बताओ. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन आई एम गिविंग यू. वी स्टॉप हियर and next class I think एक अनाउंसमेंट में तुम लोगों को करूंगा. Be punctual in the class. 10 o'clock means 10 o'clock. बहुत सारे बच्चे लेट आए हैं. Take honors seriously. एडमिशन लेके
आप सोच रहे हो कि एक कोर्स मिल गया, वो नहीं है। बिहेव लाइक ऑनर स्टूडेंट्स। आप एकदम टाइमली क्लास में पहुंचे। नंबर 1, अटेंडेंस भी हम लोग कुछ ऐसे कर लेंगे कि थोड़ा सा विल कीप सम कंडीशंस ऑन दैट। देन जो मैंने कहा था हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का चलेगा, चैनल्स वगैरह में क्रिएट करने का, एंड स्लोली वी विल again instruct how to go about. ठीक है, thank you. Okay, you can give me some feedback, and secondly you must tell me और तुम लोगों को क्या चाहिए। सर बुक करना होगा। एसी मोगलू बताया तो था। माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय एसी मोगलू, लेप्सन एंड लिस्ट। ठीक है, एसएससीसी के नोट्स है तो फिर खरीदने की जरूरत है। आप लोगों को सारा मटेरियल वेबसाइट में अपलोडेड मिलेगा, आइदर मंडे और ट्यूसडे, कल या परसों सब अपलोडेड हो रहा है। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू गिव मी योर फीडबैक एनी टाइम। लेकिन उसके लिए जो भी चैनल्स होगा हम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद कर सकते हो, या ऐसे भी आप मुझे क्लास के बाद बता सकते हो। ओके, एंजॉय योर डे। सारे क्या?